अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी, मेरे साथ उस्मान समीउद्दीन। और सबसे पहले आपसे माज़रत लेना चाहेंगे कि we've been away, we haven't been covering the Pakistan matches, or bunch of personal stuff too that kept us away. But we're back and we have a lot to discuss. Usman, how are you doing? हम आपको इंट्रोड्यूस करें एक बार फिर से। आपने तो कई पार्टनर्स यूज कर रहे हैं मेरी एब्सेंस में। मैंने कई पार्टनर्स यूज किए। I feel कि सैयद शोएब नवीद को पार्टनर सिर्फ पहुंची हुई हस्तियां ही कर सकते हैं। So I wouldn't even call myself that. and can I also point our listeners and watchers to ये जो आप पीछे देख रहे होंगे थोड़ा बहुत व्यू अहमद नकवी का, वो हमारी जो अनटोल्ड रिचेस जो हमने अर्न करे हैं यूट्यूब से, उसकी ये कमाई का एक तोहफा है एक तरफ से। You know, one of the saddest comments is very cute and it's coming from a lot of love, but it's like, listen, please don't stop doing this podcast because you don't get any views. Just continue. It's just like, they're just like, wow, this. But anyways, there's a lot to discuss. Or obviously, the first thing to start off with are Pakistani dramas. कुछ ऐसे पहले मैं रिसर्च कर रहा था और आई एंडेड अप एट अ वेबसाइट कॉल्ड reviewit.pk और उस पे जो था like I think the first post was the review of this drama called Neem. So I was like, all right, let's check out what is Neem about. तो मैं पढ़ने लगा और वो एपिसोड 14 और 15 का रिव्यू था। तो उसमें था कि like the writers kind of like, आपको पता है मुझे ये शो कितना पसंद था, मैंने इस पे कितनी तारीफें की हैं, आई थॉट इट वाज अ ग्रेट न्यू शो, ये वो। और एपिसोड 10 के बाद से जो उन्होंने किया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्या बकवास है, और मेरी काफी सड़ गई है ये। So I was like, okay, this is interesting. So I went back and read episode 10 का review and then 11, 12, 13, 14, whatever, right? So essentially establish ये हुआ कि इस ड्रामे में जो मेन कैरेक्टर मावरा हुसैन प्ले कर रही है, वो एक जो बंदी है, who's like this really amazing woman, लोगों की बड़ी मदद करती है, she's a very nice person, etc. etc. और उसकी जो जॉब वॉब भी है वो भी कोई एनजीओ शेनजीओ टाइप सिचुएशन। आई एम गेटिंग द डिटेल्स रॉन्ग, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ा था। खैर, उसकी शादी होती है एक बंदे से। I don't think you have. Mavra Hokani, I apologize to her fans, but क्या कहते हैं कि उसका जो शौहर होता है वो बड़ा अच्छा। तो ये रिव्यूअर ने लिखा भी है कि उस शौहर का कोई कैरेक्टर है नहीं अदर देन द फैक्ट कि वो बड़ा अपनी बीवी से प्यार करता है, बट श्योर व्हाटएवर, व्हिच इज लाइक यार ये मेन कैरेक्टर भी अच्छी है। और फिर एक साइड कैरेक्टर भी होता है, उसको इस लड़की से प्यार होता है, इसकी शादी नहीं होती, तो वो बड़ा अपसेट होता है, वो उससे दूर कहीं और जाने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेट अब्रॉड। एनीवेज, व्हाट दे डू आफ्टर एपिसोड 10 इज कि जो पता चलता है कि वो जो बंदी होती है वो बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो उसका मियाँ बड़ा सड़ जाता है ये और वो, तो वो नहीं सड़ नहीं जाता, ही गेट्स रियली अपसेट और वो अपने आप को विक्टिम बनाने लगता है ये वो, और वो बंदी कहती है कि तुम दूसरी शादी कर दो, और दूसरी शादी कर देता है और पता नहीं क्या। तो एनीवेज एंड द पॉइंट वाज द रिव्यूअर वाज अपसेट कि भाई इस किस्म का ट्रोप अक्सर होता है कि एक काबिल औरत अपना करियर छोड़ के अपने मियाँ की खुशी के लिए कहे कि भाई दूसरी शादी कर दो ये वो। बट उन्होंने ये किया है कि वो जो इंस्टेड ऑफ कि वो मियाँ को दिखाएं थोड़ा सा बैड पर्सन, वो दिखा रहे हैं कि जो बंदी है वो सोच रही है कि मैं टॉक्सिक हूँ, ये हूँ वो। तो द रिव्यूअर वाज लाइक यार ये दिस इज अ क्लीशे एंड आई हेट इट, बट दे डिड दिस। बट देन दे वर लाइक जो दूसरा बंदा था अशद, वो परदेश जाता है, वहां वो एक शादी कर लेता है गोरी से टू गेट लाइक citizenship or whatever, and you're thinking like he'll have to really struggle, and then he suddenly finds literally a bag of money, and so the reviewer is just like यार ये क्या stupid plot point था, मतलब ये तो बहुत ही बेवकूफ है ना, कि मतलब okay I'm on, I hated the main plot point twist, but I was on board with it, I lived with it, but ये कितना stupid है। so ये मैं इतनी 3 मिनट का लंबा प्रियम्बल इसलिए दिया है कि अभी मतलब इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान 4.5 Pakistan is out of the World Cup, right? And we're just like we have to take a break from the show, and then uske baad Pakistan plays Bangladesh, and oh wow, all of a sudden Fakhar Zaman is back in the team, and oh he's hitting sixes. Oh, before that Pakistani pacer Shaheen Afridi has found his form again. Oh, and all the pacers are not only getting wickets, but the wickets are fucking
blowing up, the stumps are flying, and the Bangladesh is out for 204, and Pakistan is batting with intent, and the net run rate is good. And so this is like that main ke, matlab, okay, this is very cliche, it's very stupid. Pakistan always does this. They've already lost all hope, but there's some mathematical possibility. और अब वो अच्छा खेल रहे हो और आप कह रहे हो कुछ हो सकता है या नहीं. So we've seen this before, and as a reviewer, you're disappointed. Okay, like that was, I wish you didn't do this. I wish you'd gone another track. But okay, I'm watching this. I'm not loving it, but I'm watching it. But then न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के हाथों सिर्फ हारता नहीं है, जलील होके हारता है. और ये न्यूजीलैंड जो पिछले 2 वर्ल्ड मर कप के जाते हैं, गिर फाइनलिस्ट थे, जाते उनकी हैं। हाँ, तीसरी हाँ। मैच हार चुका. मैंने जब वो स्कोर कार्ड देखा ना, दैट वाज बनारस लाइक, यार ये क्या है, मतलब दिस इज स्टूपिड. ये स्क्रिप्ट राइटर कौन है यार, मतलब ये आर यू किडिंग मी राइट नाउ, लाइक दिस इज जस्ट लाइक. और उसको ही फाउंड अ बैग ऑफ मनी एंड सडनली ही इज रिच. लाइक इट इज दैट level of stupid script writing, except this is reality, and I'm just take it away. Yeah, लेकिन अच्छा, उन्हें to continue this analogy very briefly, because it is truly one of your wackiest analogies, but we'll just stick with it. I'll humor you for like 2 more seconds. Is that वो पैसे का बैग मिला है, but in the end they've realized कि यार हम डॉलर की दुनिया में रह रहे हैं, हमें पाकिस्तानी रुपी मिल गया है. ये सीन हुआ है कि आपको कोई उसमें 350 पाकिस्तानी रुपए मिल गए, जो आप कह रहे हैं यार इतना पैसा मिल गया है, और बाहर का बंदा कह रहा है यार ये $1 है, तुम शायद एक पेप्सी का कैन भी ना खरीद सको इससे. बेसिकली अभी जो पाकिस्तान की चांस है ना, इट इज स्टिल रिलायंट ऑन अव्वल बात कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा. अच्छा, दिस इज नॉट अ गिवन दिस पाकिस्तान साइड, इट्स नॉट अ गिवन. बैंगलोर में इट्स नॉट अ गिवन. न्यूजीलैंड जिस तरह की टीम है, इट्स नॉट अ गिवन. आई नो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी है, और जब भी कोई क्रंच मौका आता है, पिछले वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने अपनी ऑल टाइम एक 100 मारी थी और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत गए थे. बट पहली बात तो ये है. दूसरी बात, विच बी द बिगेस्ट मिरेकल, तो ये ऐसा हुआ ना कि आपको वो एक तो वो पैसे का बैग मिला, और फिर उस पैसे के बैग पे एक रस्सी थ्रेड लगी हुई है, तो आप वो थ्रेड को खींच करके जा रहे हैं, और फिर आप एक ऐसे शानदार घर के अंदर आ गए जिसपे चाबी बाहर रखी हुई है और एक खत लिखा हुआ है कि यार मैं दुनिया से इतना मुझे गम हो गया है ना, इतना मैं डिसअपॉइंट हो गया हूं, मैं ये घर जिसे भी मिले उसे छोड़ के जा रहा हूं. ये कोई 10 बेडरूम मैंशन है कहीं बीच पे, और वो आपको घर भी मिल गया. दैट इज श्रीलंका, दिस श्रीलंका साइड बीटिंग न्यूजीलैंड, जो कि नहीं होना है, जो कि एब्सोल्युटली नहीं होना है. श्रीलंका 100 रन से ज्यादा बनाते थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो मैं अपने बाल जितने कम बचे हैं ना वो सब निकाल दूंगा. ये सीन ऑन नहीं है. अहमद नकवी, आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को प्लीज ये फॉल्स होप ना दें कि इस बार सीन ऑन है. सीन ऑन नहीं है. ये सिर्फ असद हसनैन जैसे लोग कह सकते हैं कि सीन ऑन है. ये कुछ नहीं होना है इस वर्ल्ड कप में. आप बस अग्री हो जाएं इस No, पे. no, 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 no. This is the point I was trying to make. जब बांग्लादेश को पाकिस्तान ने हराया ना, तो उसके बाद असद हसनैन टाइप लोग जो आपके बिल्कुल ब्लाइंड ऑप्टिमिस्ट हैं, तो उनकी तो गेम ऑन हो गई. उन्होंने कहा बस फॉर्मूला चल गया पाकिस्तान का, बॉलर भी चल रहे हैं, बैटिंग भी चल रही है, अब जैसे तैसे होगा पाकिस्तान की वर्ल्ड कप. न्यूजीलैंड अगर करीब मैच हार जाता साउथ अफ्रीका से, या हरा देता है व्हाटएवर, तो वी वुड हैव ऑल मूव्ड ऑन, और हम सोच रहे होते कि अच्छा यार, मे बी हम लोग इंडिया के थोड़े मैचेस पे पॉडकास्ट निकाल लेते हैं, क्या करें आगे, हम लोग अपने मिनिस्क्यूल व्यूज कैसे बढ़ाएं. ये जब साउथ अफ्रीका ने भी नहीं, एक तो साउथ अफ्रीका ऑफ ऑल टीम्स, और उसने न्यूजीलैंड को ऐसे हराया है कि मतलब थोड़ी देर के लिए आपको कैलकुलेटर निकालना पड़ा. ये दिस आई थिंक वहीं पे पाकिस्तान टीम जीत गई, पाकिस्तान क्रिकेट जीत गया. क्योंकि जब आपने निकाला ना 2 मिनट के लिए कि ओ एनआरआर क्या है, लाइक व्हेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, you lost, right? Like now you can also, oh, there's no chance and there is no this that, but we entered that zone जहां एक मुमकिन था एक लम्हे के लिए कि ओ क्या पता पाकिस्तान. और वो आई फील, मतलब देखो, जैसे कि वही जब आप देखते हैं ना, जैसे एकता कपूर टाइप ड्रामे, जो आप यू हेट the story, but you're also like, this person has been pulling this off for years and people are buying into it. वो लेवल है ना कि मतलब कि और क्योंकि हम दोनों लिखते हैं, राइटर्स, राइट, और हम मतलब कि हम ये देख रहे हैं कि कितनी स्टूपिड स्क्रिप्ट है, और ये हर दफा ऐसी होती है, और कोई इस दफा मेहनत भी नहीं की गई है कि मतलब बांग्लादेश को एक स्टूपिड सा मैच हरा के न्यूजीलैंड एकदम से 3 हार गया.
अब भाई अब सब अगले मतलब कल फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स अंटिल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच खत्म होता है, तो वो सारे कैलकुलेटर परम्यूटेशंस और कुछ बेशक ना आप फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ओ द चांस ऑफ पाकिस्तान मेकिंग इट इज स्मॉलर देन Elon Musk realizing what a dick he is, but you know the point is still that कुछ नहीं होने वाला, but वो खिड़की खुल गई, राइट? लाइक नाउ यू जब आप मतलब क्रिक इंडिया पे जो भी प्रीव्यू आएगा तो उसमें लिखना होगा कि ओ हियर हाउ पाकिस्तान कैन स्टिल मेक इट, दैट्स Yeah, आई फील कि I'm going to यहाँ break पे the ये सब I'm going to break the cardinal rule of cricket podcasting, and I'm going to cite great cricket का जो podcast होता है ना, उस क्लिप्स नजर आती हैं। आजकल पूरा पॉडकास्ट तो कोई देखता नहीं ना, वो सिर्फ आप क्लिप्स देखते हैं, अच्छी सी क्लिप होती है। एक बहुत जबरदस्त इनकी, एक्चुअली आई हैव टू हैंड इट टू देम, बहुत मजे की क्लिप थी, which has been picked up by the Pavilion, by the way. So it's this incestuous world of broadcast and podcasting in which everyone knows everyone. It's been picked up, but उस क्लिप में, आई डोंट नो इफ यू सीन इट, you've been away, I don't know if you've seen it, but वो जो दो बंदे हैं, सैम पेरी और दूसरा आई फॉरगेट हिज नेम, मगर वो सैम पेरी एक्सप्लेन कर रहा होता है कि उसने दिल दिल पाकिस्तान सुना स्टेडियम पे, पाकिस्तान जब जीता, तो वो मैच कर रहा है कि दिल दिल पाकिस्तान का जो ऊपर नीचे होता है गाने में, वो पाकिस्तानी कैंपेन होती है उस तरह से, कभी एकदम जबरदस्त कैंपेन, थोड़ा सा ब्रूडिंग, एंड बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है एक्चुअली, एंड ही सिंग्स इट ऑल्सो, ही सिंग्स इट इन ट्यून, इन टोन, एंड इट्स ब्यूटिफुली डन. This is like 2 minute long clip. And like they're like, oh yeah, it's on, it's on. Basically हमारी version वो कर रहे हैं कि यार it's on, it's on, it's on. और फिर end में Sam Perry कहता है, yeah, but they beat a bloody shit team, so that's all it is. It's nothing more than that. They basically Pakistan beat Bangladesh and the entire 230 million people in the country like, यार कुछ on है, मैं सूंघ रहा हूँ कुछ. I can smell it. I can sense it. It's not. Guys, Bangladesh were so bad in this tournament that them beating Afghanistan was an upset. Legitimately, them beating Afghanistan was an upset. They're that bad in this tournament. So Pakistan सो beating Bangladesh is nothing. इस पे आई थिंक उस्मान मैंने और नो यू यू हैव टॉक्ड अबाउट बिफोर और पॉडकास्ट में मैंने इस पे रेफरेंस की होगी, मगर एक दो फिर से दोहरा दूं तो 2011 में Grantland is really excellent website for writing on American sports. A lot of the writers there went on to do very great things. उन्होंने अपने दो राइटर्स को 8 घंटे की डीवीडी दी, कहा कि भाई ये जो मैच है ये दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी है, इसको सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, ठीक है? And they're like, what is it? And they're like, this is India versus Pakistan at Mohali. Uh, it happened earlier this year. These guys have never watched cricket in their life. They're two American sports writers. And they have no idea about, like, it's not like उन्हें पाकिस्तान इंडिया में कोई इंटरेस्ट है या उन्हें कुछ नहीं पता है. उन्हें वो कहते हैं कि अब आपने जाए साइड में तुम कुछ भी करते रहो, तुम्हें 8 घंटे एंड टू एंड या जितनी 10 घंटे की पूरी, बस दे इंक्लूड द सेरेमनीज एंड एवरीथिंग, you With guys have everything. to watch the full thing and you have to live blog it. And they like they're pretty engaged for like the first 40 minutes, and then they're completely like, the updates are coming an hour apart. और वो अपडेट ये है कि हम लोग कॉलेज फुटबॉल का एक मैच दूसरी स्क्रीन पे देख रहे हैं और हमें कुछ नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है, और वो बात ही भी ऐसे कर रहे हैं कि अच्छा देयर इज लाइक 3 pieces of wood on one end. Oh, so like one of my favorite parts of this is that when I think did Umar Akmal drop Sachin when Sachin like drives it No, straight? he Who didn't. He didn't somebody drop Yunus, Misbah, Afridi. I think those were the guys who dropped him. somebody drops. So anyway, they drop, Yeah. and like basically everyone is just like, oh shit, he dropped him. And in the commentary they're just like, you dropped Sachin and this was a dolly and ye wo. And these guys are like, holy shit, ye to glove bhi nahi pehne hue aur usne itni khech ke mari, it's a line drive and the guy was just 10 feet away, and like, I can't believe they're criticizing him for dropping that, ye wo. Anyways, but they have like, there are two things I love about that is K, and they're related. Basically at some point they really start getting into Shahid Afridi. They're like, hey, we like this is the Pakistani captain, and there's just something about him, and they don't understand anything, but they're like kind of into him. Or वो उसके ऊपर जब भी close-ups आ रहे हैं, वो full उस पे blocks कर रहे हैं वो. And at some point, they also get into the idea of, oh shit, man, Pakistan is in this. Like they have this briefly, like So the point है कि basically चाहे ये एक जो पाकिस्तान की कशिश है, it really doesn't matter whether it's against a good team or a bad team or whatever. Like people, and I used to think it's like people who watch a lot of cricket like Pakistan behaving like this, but it's not even that. It's like random strangers will watch a match that they know nothing about, and at some point they'll be like, "Yeah, Pakistan ka scene."
And then, like, as it happened in that match, as it happens in every match, Pakistan वो हार गया. तो कोई वो सीन end में उन्होंने भी कोई सीन नहीं ये, था. yeah, you know, वो This is the जीतता नहीं है problem. मगर This is the पूरे problem. You know, this is the actual problem is, and I say this half seriously or quarter seriously, इसके जब ये सब चीजें मेन स्ट्रीम हो जाती है ना, when they become shit. Like when all your best bands that you loved because nobody else knows about them, you're like, oh man, I love these guys, and this is why they're great, because you, half the reason is because they're good, but the other half is because you don't know anything about them. That's why they're great. ये जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीमिंग हो गई ना, सॉरी, ये इसमें बस ये बचा है कि किसी तरह से आप उसे डॉक्यूमेंट करके कमर्शलाइज करके बेचना शुरू कर दें. यानी But आप एक बना दें पाकिस्तान सीन ऑन का मग बेचना शुरू कर दें, हाल मग बेचना शुरू कर दें See, आप. Hal actually now it can be said is like Hal to is like the final form, right? Like it's something जो बड़ा ही Yes. rarely आपको दिखाई देता है. जो actual scene है ना वो यही जो आपको इसका हाल का जो you कुछ know होता नहीं. China copy second hand ये वो वर्जन जो मिलता है ना जो थोड़ी देर के लिए कि मतलब वो बिल्कुल एसेंशियली अगर आप ड्रग्स की बात करें तो वो जो शुरू में जो आपको मेहंदी मिला के रॉड में जो चरस मिलती है और आप लाइक I've heard I obviously don't know about this. तो वो जो मतलब it's really you're smoking gobar or something. वो भी आजकल मतलब इस वर्ल्ड कप में आपको वो वाला मिल रहा है We नशा. smoke gobar, but not the other stuff, of Yeah, course. but you know it's reminding you of that final stage. So you're like यार वैसे सीन तो हो सकता है. So और you're इनफैक्ट saying ये that भी we मतलब should we बहुत should remain we should remain in this expectant, pregnant, full of possibilities mood until मैं ये around सिर्फ कह रहा हूँ 24 hours from now. बेसिकली के हाल एक तरफ है बट हाल इज लाइक द रेयर थिंग जो पाकिस्तान की एक्चुअल गेम है वो है केकेजी होना एक लाइक यू नो जस्ट लाइक आपका Selling जो the hal, but not selling it. Yeah. या कि ये आपका आपको एक्सक्विजिट लेवल पे आपका दिल तोड़ना आपको चे बनाना ये एक्चुअल जो द स्टॉक डिलीवरी हाल इज This द is यू नो इज लाइक द रेयर वन जस्ट या जो स्टॉक डिलीवरी वो यही है कि मतलब ना बेसिकली अब ये होगा कि पाकिस्तान फर्ज करें न्यूजीलैंड को हरा देता है ठीक है और फिर श्रीलंका जो है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई 350 बनाता है और न्यूजीलैंड यू नो 34 for 6 हो जाएगा और फिर मतलब ना पूरे लाइक लोग उस्मान को मैसेज कर रहे हैं वही क्लिप क्या देख ये देख पाकिस्तान लोग okay. पागल हो रहे हैं लोग टिकटें खरीद रहे हैं इंडियन वीजा अप्लाई हो रहे हैं ये वो ठीक है और फिर न्यूजीलैंड ना 10 ओवर में उनकी नंबर 7 और 8 350 चेज कर लेंगे Jimmy ठीक Neeson है और Mitchell Santner आके 300 रन की पार्टनरशिप 5 ओवर में और और खत्म, गेम और ओवर. वो बेसिकली होगा कि जब न्यूजीलैंड बिल्कुल करीब है ना तो बारिश होगी कोई 10 मिनट के लिए प्लेयर्स ऑफ और लोग फुल दुआएं और नमाजें और ये और वो और फिर वापस बारिश हट जाएगी और नीशम 2 बॉल में छक्के मार के खत्म कर देगा मैच और वो तो मतलब ना दैट इट विल स्टे अलाइव दैट मोमेंट विल स्टे अलाइव अंटिल देन और वो हर लम्हे पे ना कि अब आपको यार अब तो खत्म ही हो गया सिर्फ 20 रन बारिश हो गई ओके वो बैंगलोर में सुना ओ लोग पिसल रहे हैं इतनी बारिश हो You're गई right. असल हाल ये है. असल हाल ये है. चाइना कॉपी हाल जो है वो असल हाल, बिकॉज वो वाला हाल आता नहीं है, वो होता नहीं है. या this is definitely what's going to end up happening. तो खैर जब we still have to I guess seriously preview New Zealand versus Pakistan अभी क्योंकि कर जैसा लेते कि वो कहा कि भाई मतलब पाकिस्तान ने वो तो एक सस्ती टीम ने एक और सस्ती टीम को हरा दिया तो कोई खास उस पर गहरी बात न्यूजीलैंड करने की जरूरत नहीं है न्यूजीलैंड की बिगेस्ट चैलेंज है कि उनके प्लेयर्स नहीं है. उनके लिटरली लाइक आई थिंक वो कोई नौ, उनका लूक रॉन्ची आई थिंक खेलने वाला है, और साइमन डूल को कमेंट्री से बुलाया गया है कि यार आप भी अपना थोड़ा सा हाथ लूज कर लो, आप अपना बाजू थोड़ा सा लूज कर लो, आपको भी आना पड़ेगा, आपकी हाइट ठीक ठाक है बैंगलोर पिच के लिए. तो दे, आई मीन poor guys, यार, like they were also going through their own complete like crazy ass campaign. New Zealand, they started off so well, and now like they've been hit by these injuries, and now they're kind of like it's catching up to them. But yeah, this is the thing about Pakistan, they always play at the level of their opponents, जो भी हो ना. तो अगर वो भी कल उनके सिर्फ 11 प्लेयर है ना फील्ड पे, तो somehow Pakistan will find a way कि सब उनके गिर जाएंगे और सिर्फ 11 बचेंगे, वो भी आके सिर्फ 11 से खेल रहे होंगे. It's going to be like Shadab. I don't know if he's going to play. उसका concussion की जो थी injury, I think they're going to take a call on him in the morning, whether he plays or not. They've got questions over, if Shadab doesn't play, then do you continue with like Usama? Do you go with fast bowlers?
Do you rely on like Ifti Chachu, who's becoming secretly the hero of your campaign? This is the great fallacy of this campaign is that Iftikhar Ahmed is your best player, is your locked in consistent performing. यहाँ पे अगर होल है ना तो मैं आके फिल कर रहा हूँ. आपको एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए, आप इफ्तिखार अहमद को न्यू बॉल देते हैं. आपको एक लोअर ऑर्डर हिटर चाहिए, आप इफ्तिखार अहमद को भेजें. आपको कुछ भी चाहिए ना, आपको इंटरव्यू, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है, आप इफ्तिखार अहमद आकर आपको सबसे अच्छी लाइंस देगा कि यार जब हम लोग हारते हैं तो आप कहते हैं बिरयानी की गलती है, और जब हम लोग जीतते हैं तो सब बिरयानी को भूल जाते हैं. This is Iftikhar Ahmed is the stopgap in Pakistan's campaign. He's like the hero, the super stopgap in this campaign. हर जगह वो फिल्म होके आ गया है. बॉलिंग करा रहा है, वो बैटिंग कर रहा है. चीता है यार इफ्तिखार अहमद. He's become like a total cheetah. I view him differently now after this campaign. But that is also the great fallacy in this campaign. That is also the great plot hole in this campaign, is that you cannot win a World Cup with Iftikhar Ahmed as your main player. I don't think. I'm sorry, Iftikhar Ahmed, but you cannot win a World Cup with Iftikhar Ahmed as your main player. I mean, I think कि पाकिस्तान का एक क्लासिक टूर्नामेंट में तो यही होता है ना कि आपका like you know द वायर और समथिंग के सीजन 1 में जो कैरेक्टर्स हैं वो सीजन 4 तक बिल्कुल बदल चुके होते हैं. तो वो तो होगा कि अगर अगर वी आर विटनेसिंग दैट वंस इन अ जनरेशन पाकिस्तान टूर्नामेंट विक्ट्री, then it stands to reason कि Iftikhar is the hero in the first act and we see somebody else in the final act, because that's literally what happens in 92, right? Like Inzamam and Wasim show up for the final 2 games, and they've been this kind of recurring theme throughout the tournament, that happens. That Or would have worked if Iqbal Sikandar or Wasim in Haider were the heroes of 2009. the first. If Iqbal Sikandar or Wasim Haider were the heroes of the first half of '92. I mean, who is the hero of the first half? If it's like Rambo for his hundreds. bro, so तो आपने खुद ही आपने ये पॉइंट प्रूव कर दिया ना कि अगर किसी टूर्नामेंट में रैम्बो फर्स्ट एक्ट का हीरो हो सकता है, तो इफ्तिखार तो अभी इफ्तिखार doesn't even compare, bro. मे I बी feel like ये फ्लॉ है कि अगर ये टूर्नामेंट 92 होना ही था तो इमाम नीडेड टू बी द हीरो. आई फील इमाम इज द ओनली पर्सन हु कैन is in the same universe as Rambo. Obviously, Imam is like Pluto and Rambo is the sun of this like So galaxy or you're saying whatever. that basically tomorrow Iftikhar Ahmed is man of the match performance. Like लिखा हुआ है I already. mean, like I think कि अगर आप like देखिए कि एक चीज मुझे ना, एंड आई थिंक आगे वाले सेगमेंट में हम थोड़ी तफसील में जाएंगे इस पे, मगर एक चीज है कि you and I are doing this, a big part of that's fun is that we're just like kind of talking, और अब लोग कहते हैं ओ भाई आप जो है वो एनालिसिस क्या दे रहे हैं, ऐसी बस हंसी मजाक कर रहे हैं. इट्स लाइक एज वसीम भाई सेज कि हम लोग भी अमरूद बेचने नहीं आए हैं, मतलब थोड़ी बहुत मेहनत हमने भी की है. तो अगर आप इफ यू वांट टू टेक ऑन हिस्ट्री, सो पाकिस्तान एज यू मेंशन 2019 के वर्ल्ड कप में, 92 के वर्ल्ड कप में दे डू इट बैक. It's actually that Rambo 100 is like, along with Kamran Akmal's 100 in the Karachi Test in 2006, like are the great anti-hero villain hundreds of Pakistan cricket. Amazing hundreds that are completely forgotten. Um, तो मतलब कि 99 में आपने उनको तबाह कर दिया था, like कि एक तो ये वर्ल्ड कप हिस्ट्री आपकी एक तरफ, 99 में right? didn't Wajahatullah Wasti score 100 somewhere? Yes, like कि वो पाकिस्तान की चेजिंग पे सबको स्ट्रेस था, एंड उन्होंने मतलब basically almost it was a 10 wicket win, did end up being I think that one, but तो एक तरीके से ये है. दूसरा कि न्यूजीलैंड इटसेल्फ पिछले 2-3 मैचेस में जिस तरीके से जिन टीमों से हार रहा है, आप कुछ कह रहे एज यू सेइंग लाइक अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज कि उनका स्क्वाड में आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो इंजर हो चुके हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है उनके लिए अच्छा खेलना उस सूरत हाल में. आई थिंक लाइक ऑल लॉजिक स्टिल सजेस्ट कि पाकिस्तान हार ही जाएगा. बट मैं एक और चीज कहना चाहूंगा इस पे ये भी कि back to non-serious analysis, but like that 2004 में that great one day in Karachi that India makes 346 and Pakistan Yeah. failed to chase it down. तो वो मैं जब स्टेडियम में देख रहा था ना, तो मेरे साथ 2 अंकल बैठे हुए थे, और
मैंने वादा किया था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए ना, मैं इन अंकलों की तरह नहीं हूँ। उस वक़्त मेरी उम्र 21 साल थी, सो आई वाज़ वेरी लाइक आइडियलिस्टिक। वो 2 अंकल बैठे थे, ठीक है, वो शुरू से बैठे थे और ना वो एक-दूसरे को तंग कर रहे थे फॉर सम रीज़न देयर use the like मेरे ख्याल में somebody less burger than me could maybe knows why what this term was, but वो कहे जा रहे थे उन्होंने शुरू ये term यूज करे थे राणा नवीद जब बॉलिंग करा रहे थे, गंजा भी था, उसकी मलेट थी, उसको रख के मार रहे थे। तो कहता अबे देख रहा है ये यैया बॉलर है, अबे ये फुल यैया है, मैं तेरे को कह रहा हूँ ये यैया है, ठीक है। तो वो अब वो हर चीज को यैया कह जाते थे, अबे क्या हो गया, यैया हो गया क्या तू, ठीक है, अबे ये क्या यैया बन कबाब है, लाइक ठीक है, वो हर चीज पे ना, एंड वो पाकिस्तान टीम की ना उनकी डिफॉल्ट थी, क्या अबे ये यैया टीम से कुछ नहीं होगा, अबे क्या मजा है, तेरा आ गया तेरा यैया फिर से, वो ये था। फिर जब 7 घंटे इनका यैया चल रहा था, एंड दे वर जस्ट लाइक cynically laughing at everything. But in that final hour when finally it looked like Pakistan might win this, तब उनकी बोलती बंद हो चुकी थी, ठीक है? उनकी भी फटी हुई थी और that was like a rare moment Pakistan team was doing amazing. तो मैंने यही सोचा था कि मैन या तो आप ये हो सकते हैं कि आप 100 मैचेस या 1000 मैचेस में एक दफा आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिले और आप फुल एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज यू बिलीव्ड 999 दफा, या आप ये यैया वाले अंकल बन जाएं, तो you're right most of the time, but is this the life you want to live? So I can be a yaya uncle and be like, अबे ये yaya टीम न्यूजीलैंड को नहीं आती, क्या हो गया तेरे को, तेरी yaya टीम निकल रही है, मगर Yeah, team. I'm not going to give that emphasis. And because of this yeah story, I will also now say that I think Pakistan kal jeet jayega. Actually, no, I am that uncle, but I'm not a yaya uncle. I'm keeping it real, man. I'm keeping Right? it absolutely real. But you know what is yaya is the goddamn Pakistan cricket board is like a yaya board right now. I don't know if is this a good moment to segue into this? Is this a good way to This is segue the into? moment. This is the moment. So, okay, I think we're going to start off with a little quick countdown of, and me and you were discussing this over WhatsApp the other day, of like single handed, like the worst or the greatest, whichever way you want to look at it, the worst or the greatest PCB acts of public communication over the last, I don't know, however many years, like since you can remember press releases and videos that they make. Okay, and you know what this is building up to, but so the greatest like videos that they've released or press releases that they put out there, right? So the first at number 5, I think we've done 5, right? At number 5 is, I don't know, अहमद तुम्हें याद है, ये होगा तुम्हें याद, of course याद होगा, वो जो इन लोग ने एक स्क्वाड अनाउंसमेंट करी थी वीडियो के तहत, जिसमें मोहम्मद वसीम उन मिस्कीन प्लेयर्स को कॉल कर रहे थे जिन्हें वो ड्रॉप करने वाले थे, और उसके बाद फिर कभी नहीं पिक करना था, यानी उसकी एक जो फोन कॉल होती है ना, कभी कभी आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ जो करते हैं शायद एक फोन कॉल कि यार इसके बाद मैं से खत्म करूंगा नहीं रिलेशनशिप, उसके बाद मुझे कभी फिर से बात नहीं करनी है, ये उस तरह की फोन कॉल मोहम्मद वसीम ने आई थिंक ताबिश खान को करी थी कि यार ताबिश, एंड दे वीडियोड दिस, this cruel act of like sporting ruthlessness, right? And I don't know how the players agreed to it also. हाँ नहीं, आप जरूर बनाए मेरा वीडियो वसीम साहब, आप बनाए मेरा वीडियो कि मैं ड्रॉप हो रहा हूं, ताकि पूरी दुनिया देख सके मेरी ह्यूमिलिएशन, पूरी दुनिया देख सके, आप जितना नहीं, आप हौसला रखो, आप फिर से आओगे टीम में. So okay, that's at number 5. uh Number 4, Ahmed, you please take this away. This was the World Cup 92 video that the PCB released very recently. I mean, so एक बड़ा अमेजिंग सिचुएशन, दिस इज आई फील पीसीबी की जो एक्चुअल ट्रैजिक कॉमेडी होती है ना, कि आप एक सिचुएशन में यू कैन एक्चुअली जस्ट गेट अवे विद इट, ट्राई एंड कीप इट सिंपल, बट लाइक पीसीबी ट्राइज टू एक्ट स्मार्टर देन दे आर, एंड सो ये 14 अगस्त की वीडियो थी ना, I think so, yeah. या 14 अगस्त की वीडियो थी, ऑब्वियसली पाकिस्तान में उस वक्त तक जो है साल हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत निकाल दी गई थी, और उसके सब्सिक्वेंट अनरेस्ट, और उसके बाद क्रैक डाउन, और उसके बाद स्टेट की ड्रैकोनियन मेजर्स टू जस्ट make people stop even mentioning or remembering Imran Khan. And then BCB decides that, hey, what a great time to do a video on the history of Pakistan cricket. Because, of course, this is a topic where there's nothing controversial about the history of Pakistan cricket. And let's also show some clips from the most famous and iconic moment. And wouldn't matter if we get rid of the guy whose entire career is built Nobody will on that notice. very moment. No, nobody will notice. And then I feel कि, you know,
इफ यू वांट टू बी मतलब कि जैसे कि ये ना कि ठीक है आपने वीडियो निकाली लोगों ने आपकी बचाई ये वो फलाना खाना बट आप ना एक लॉन्ग रन में आप एक गेम खेल सकते हैं कि देखो भैया ये रियलिटी थी हमने इसके मुताबिक किया तुम भी यही करते और यू नो लाइक यू ओन इट ठीक है कि हमने ये किया भी ठीक है कर दिया। फिर आपने एक नई वीडियो निकाली उसमें एक एक्सप्लेनेशन कि ओ भाई वो हमारे कजन ने ट्वीट कर दी थी और वो मेरे नेफ्यू इंस्टेंट ने ने ट्वीट एडिट कर की दी। and then you just add like they did this measurement okay like is I think 16 frames is enough that it appeases the base and yet does not piss off the boys. Okay, let's repost this problem solved. It's like mission accomplished. That was number four. Let's move on. Let's move on. This was like, I don't know, man. That whole video was like, I imagine, and this I'm gonna drop it at this, but imagine if you made Godfather, but you like airwashed Marlon Brando out of it. Right? This is literally this is that कि यार वो story उसमें कौन बाप था उनका कोई नहीं था. Anyway, number three was Ijaz Butt. This is also another memorable one. Was Ijaz Butt, and I remember I called him up on this, reading out a prepared statement, no less. So there was more minds than just him, Marhoom Ijaz Butt Sahab. There were And more it minds wasn't than an just off him. the cuff. No, no, it was prepared. Somebody sat down and said, अच्छा ये लिखते हैं ये स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने अक्यूज करा था इंग्लैंड प्लेयर्स को मैच फिक्सिंग कि आपने अच्छा आपके अखबार ने ना आपने नहीं ईसीबी ने कुछ नहीं करा है आईसीसी ने भी कुछ नहीं करा है आपके एक टैबलॉइड अखबार ने एक स्टिंग ऑपरेशन करा है उसमें हमारे प्लेयर्स ठीक ठाक यानी रेड हैंडेड गिल्टी फाइंड करे गए हैं और चोट के थद्दे पकड़े हुए you could not find more of a red-handed catch than that video and that sting operation. Or PCB decided our response would be that we will draft out this statement and we will read it out in which we will say that we are accusing England players of match fixing. बस सुन लें आप और सबको एक लाइन लगी हुई थी अहमद नकवी आई रिमेंबर रिपोर्टिंग दिस एट द टाइम बाजाब्ता यानी क्यों आपको टिकट नंबर लेना था क्या अच्छा नहीं अभी वो एपी से बात कर रहे हैं बट साहब पहले उन्हें वो डिक्टेट कर रहे हैं ये स्टेटमेंट उसके बाद एएफपी का नंबर है फिर वो रॉयटर्स को करेंगे अच्छा फिर आप क्रिकेट है ना आप उसके बाद कॉल करिएगा और वो सबको लाइन से और हम लोग फिर एक दूसरे को कॉल कर रहे थे जर्नलिस्ट जो सहाफी थे हम लोग कॉल कर रहे थे कि यार ये मैं जरा वर्ड फॉर वर्ड तुम्हें कॉल करके चेक कर रहा हूँ कि यही स्टेटमेंट थी ना आपको भी सेम दिए ना ये ना हो कि आपको कुछ और दे दिए हमें कुछ और दे दिए same statement ditto everyone was like acha so he really is accusing so that was number 3 okay so number 2 I have put are we agreed on this order because number 1 or number 2 uh, I don't know I feel हाँ recency bias पे यू नो आई फील नंबर वन जो मेरे ख्याल में जो होनी चाहिए वो ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एंड ऑल बोर्ड्स की ऑल टाइम टॉप लिस्ट पे इज वेरी okay डिफिकल्ट टू टॉप ठीक दैट है वन तो number क्योंकि उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत नहीं है सो ठीक एंड है यू टेल एनीवन अबाउट लाइक genital warts that's a part that's a party conversation starter right there. you just have to say literally those two words and like people are instantly like yeah that's the winner man उसपे कोई शक नहीं ये जीत गया यानी ये आ गया है ऑस्ट्रेलिया की 99 और 2003 और 2007 की टीम इन द वर्ल्ड कप ऑफ प्रेस रिलीजेस आप बस जेनिटल अवार्ड्स कह दें दैट्स वन हैंड्स डाउन लोग ने अपने असला वहीं पे गिरा दिए कि नहीं यार ये हम जीत नहीं सकते Number 2 पे, just to humor us, number 2 पे was the recent press release, which is why we're talking about this PCB administration, in which PCB साउथ अफ्रीका गेम से पहले हाँ अफगानिस्तान डिफीट के बाद और साउथ अफ्रीका गेम से पहले पीसीबी एक प्रेस रिलीज निकालता है कि भाई हम सब आओ मिलके हम सब पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करते हैं लेकिन हम थोड़ा सा साइड पे हो रहे हैं हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान टीम फारिग है ये सब बाबर आजम और इंजमाम की गलती है उन्होंने ये टीम पे करी तो आप लोग जरूर सपोर्ट करें लेकिन हम लोग थोड़ा सा साइड पे इन्हें साइड पे हट रहे हैं ताकि फिर हम एक दो दिन बाद इन्हें सैक कर सकें Like am I missing that's anything basically that was the PCB's version. Okay, guys, you know, just because they don't have many views, please don't stop making their podcast. But like you know, okay, yes, Inzamam and Babar's team has lost every match in a humiliating fashion, and I know you want to kill them and you want to bludgeon them, but you know, guys, let's support them. Obviously, we have nothing to do with this. We just happen to be the board that runs this sport. और फिर उसके मतलब I mean,
आई फील कि यहाँ पे ना जो वही जो पहले भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि एक के बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि देखें ऑस्ट्रेलिया में सिस्टम है, पाकिस्तान सिस्टम फॉलो नहीं करता। तो ये we don't even have the time to really get into all of the crazy things over here, but like 4 साल में आपके 3 साल में 4 चेयरमैन है, हर चेयरमैन ने आके अपनी कोई नई ऊटपटांग चीज शुरू की है। सबसे क्रेजी चीज है कि you've got Mani and Wasim Khan laying out a very controversial domestic setup that Imran Khan has spent the last 30 years advocating कि आप ऑस्ट्रेलिया का 6 टीम स्टेट सिस्टम फॉलो करते हैं। वो requires a lot of political drama to pull this off. We don't have the time to get into. Maybe that could be an episode one day, but like उसके बाद आप midway through this, you get rid of those two, and then like Ramiz Raja comes in. What does Ramiz Raja do? He now launches this league which is cannibalizing the one successful product जो PCB ने बनाई है, जो कि PSL है। PSL के ही नफे में नुकसान करने के लिए उन्होंने PGL खोला, जो ऑब्वियसली उसकी ना कोई फ्रैंचाइज बिकी, ना कुछ हुआ, और फिर वो भी निकल गए। फिर नजम सेठी थोड़ी देर से आए, फिर वो निकल गए, ज़का अशरफ आए हैं। पहले दिन से इंकशाफ किसी वक्त भी निकलने वाला है। तो जो लोग जो हायर हो रहे हैं, जो कोई चेंजेस करना चाह रहे हैं, जो किसी को अकाउंटेबिलिटी करना चाह रहे हैं, वो किस तरीके से करेंगे कि जब ऊपर हर 2 दिन बाद कुछ बदलता रहता है। एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस, लाइक there's this whole thing like PCB is the new PIA and whatever. Like PCB is not run, like does not require the state for financial support. However, क्योंकि आपका जो वजीर आजम होता है वही पेट्रन इन चीफ है और वही चेयरमैन को का इंतखाब करता है, तो इसलिए हमेशा सियासी इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है। एंड दैट मीन्स कि वो जो भी आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब आई थिंक एक्चुअली पीसीबी बहुत अंडररेटेड है बाकी पाकिस्तानी इदारों को जब आप देखें कि उन्होंने कितनी तरक्की की है, एंड दे बीन सेल्फ सफिशिएंट थ्रू द एक्साइल एंड नाउ आर डूइंग relative to Pakistani institutions a pretty good job, but मसला वही ऊपर से जब हर 2 दिन बाद कुछ बदलता रहता है, और उसमें ज़का अशरफ लाइक कि ये तो मैं स्ट्रक्चरल बात कर रहा हूँ, उसकी जो हरकतें हैं कि आप जो है, ये प्रेस रिलीज तो वाज लाइक बैड वन, बट उससे पहले भी थी कि जी बीसीसीआई के ब्लीप 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 पे है कि बहुत सारे ब्लीप्स हो गए, बट फिल इन व्हाटएवर यू वांट, बट के पे है कि भाई पाकिस्तान को ना ही कोई प्लेयर्स तक को बड़ी मुश्किलों से वीजा दिया है। अब तो पीसीबी स्टेटमेंट निकाल रहा है, बीसीसीआई does enormous welcome of PCB chairman, which there's no videos of. They never show him on TV. They really do everything to erase him, but of course the PCB is putting this out. The PCBs has this entire Machiavellian drama to like in the media office में नई hires हो रही है, demotions and removals, and ये वर्ल्ड कप के दौरान ये सब कुछ चल रहा है। I mean, like just the kind of And to the icing, the cherry on this is that a TV channel, leading TV channel, has basically said that chairman ने हमें allow करा कि हम screenshots leak कर दें of a conversation between your national team captain and a senior official of the PCB, in which the national team captain is saying कि नहीं नहीं, मैंने चेयरमैन को ना तो कॉल करने की कोशिश करी है और ना उन्होंने मेरा फोन रिजेक्ट कर दिया है, बिकॉज the राशिद message। लतीफ साहब ने कहा कि चेयरमैन तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं बाबर आजम का। तो यानी कि वर्ल्ड कप के दौरान ना ही कि आपके कप्तान की प्रायोरिटी ये है कि वो चेयरमैन को रीअश्योर करे कि पीटीवी स्पोर्ट्स पे जो नैरेटिव चल रहा है वो दुरुस्त नहीं है, मगर चेयरमैन फिर उस बात की ले रहे हैं कि ना ही सिर्फ इसको हम टीवी पे चलाएंगे, मगर मैं जाके एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू उस सहाफी को दे दूं जिसने इस पूरे वर्ल्ड कप में लाइक आई मीन I think अगर मैं कहूँ कि वो झूठी खबरें हैं, तो I have to somehow find a way to prove that, whatever. I'm not getting into that, but like the kind of stories this guy's pulled out has definitely got a lot of enemies in the Pakistan dressing room. उस सहाफी के साथ जिससे मतलब ना ही सिर्फ प्लेयर्स आधे 99% पाकिस्तान क्रिकेट की सड़ी हुई है, उसको जाके आपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया। मतलब कि जब वो शुएब जट एयरवाई वाले वसीम बदामी के शो में जब उन्होंने टेक्स्ट दिखाए, तो अजहर अली वाज अ फेलो पैनलिस्ट इज लाइक कि ब्रो तुम क्या कर रहे हो, और वो कहते हैं देखो जर्नलिस्ट और शुएब जट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, इट्स बेसिकली कि जी कुछ भी हो रहा हो ना तो सहाफी का काम है कि जो है वो दिखाए उसे, लाइक नहीं भाई। यार I swear, bless Azhar Ali though. This is why we love him. This is why you have to love Azhar Ali, because he called it out there and then. He said कि ये आपके पास परमिशन है ये सब दिखाने की. Bless Azhar Ali. Well done.
the future of this administration may or may not be decided. Well, it will be decided one way or the other over the weekend. I think या तो उन्हें extension मिलेगी या वो खत्म हो जाएगी कमेटी. कुछ लोग से सुनने में आ रहा है कि चल जाएगी वर्ल्ड कप के बाद तक. कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसी वीकेंड खत्म हो जाएगी. Nobody knows anything. He's met Shahid Afridi. I'm not a tea leaves reader. I don't know what that means. Other than Shahid Afridi is like big and he's massive and he's influential. मगर मुझे इस पे कि इसका इस मीटिंग का क्या मतलब है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट मैं इसका एक जरूर इसका मतलब यही है कि अगर वर्ल्ड कप के दौरान आपकी इस लेवल की डिस्ट्रैक्शंस चल रही हैं हाँ. दिन ब दिन रोज, और उसमें मतलब प्लेयर्स को घसीटा जा रहा है, मतलब ये भी नहीं है कि चलो ये सिर्फ एक बोर्ड का इंटरनल कुछ है, डायरेक्टली प्लेयर्स के प्राइवेट कॉन्वर्जेशंस आती, जो बातें चल रही हैं, टेक्स्ट हैं, वो आप टीवी पे डाल रहे हैं, उसको जस्टिफाई करवा रहे हैं, आप और जर्नलिस्ट को बातें कर रहे हैं, आप खुद वहां विजिट्स कर रहे हैं, लाइक कि छोट मतलब आई मीन इश्यूज अबाउट लाइक जो हमें ये तो खबरें बाहर भी नहीं आती हैं, बट आई थिंक एट अ पर्सनल लेवल जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड कप के दौरान डिसाइड हो रहे थे, साइन हो रहे थे, व्हिच ऑब्वियसली आपका अपना जॉब का कॉन्ट्रैक्ट जब नहीं हो रहा होता, आपकी कितनी भटी पड़ी होती है. दीज गाइज आर डूइंग इट व्हाइल दे प्लेइंग अ वर्ल्ड कप, व्हाइल दे, एंड दिस इज, ये भी याद रखें कि जका अशरफ के साथ जो भी हो, मतलब जब इनको इंडिया में जब रमीज राजा ने कहा था कि जी मुझे पता नहीं फला बिजनेसमैन ने कहा कि मैं करोड़ों बिलियन डॉलर्स दे दूंगा ये वो, और टीम ने हरा दिया, और वो बेचारे एंड में मतलब ट्वीटें करवा देते कि भाई कहाँ है हमारे पैसे, नहीं मिले. कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नहीं मिले. कि I don't even know, but I guess other than you like basis PCR people, most people find Ravi's Raja more honorable than Zaka Ashraf. So okay, like that's the bar. कि रवीज राजा ने मतलब ये करके उन्होंने हरा दिया, कुछ नहीं हुआ. ये साहब जो है वो हर दफा मैच हारते हैं तो पूरी दुनिया जहान के एक्स प्लेयर्स से पूछा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. It's a joke, and so like I think it's very easy to be like नहीं उसामा से बॉलिंग नहीं हो रही है और शादाब से ये नहीं हो रहा ना. These are valid points, but the absolute dysfunction that this team is dealing with and has been dealing with for years, and for the entire existence of Pakistan cricket, वो लोग बड़ी आराम से नजरअंदाज कर लेते हैं कि जी हमारे टैक्टिक गलत थे और हम सिस्टम नहीं करते. भाई किस मुल्क में रहते हो आप, वहाँ क्या हो रहा है, और उसके 100%. बावजूद भी अगर ये सब चल रहा है, बड़ी बात है. And of course, this is all deliberate and exactly the reason why Pakistan will win this World Cup, right? because because of course dysfunction. Hello, this is how they win it. So number one on that list, we've already discussed, 2 words: genital warts. Greatest ever PCB release of all time. It was done by a PCB official to try and screw over Shoaib Akhtar's career, and that didn't turn out too great. But that release lives on forever in infamy and legend. पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री आप उस प्रेस रिलीज के बगैर आप नहीं लिख सकते हैं. जो नहीं बता पाकिस्तानी सकते. क्रिकेट की तारीख है, आप नहीं बता सकते हैं वो तारीख. It is मतलब अगर वो पाकिस्तान प्रेस रिलीजेस की वीडियो बनती जिस तरीके से पीसीबी की वीडियो थी, तो दिस प्रेस रिलीज इज द इमरान खान of The showstopper. Yes, of course. इसको अगर आप निकाल देंगे तो लोग कहेंगे इसके बगैर वीडियो बनाई कैसे तुमने. So नहीं हो that's how सकता. important. ये नामुमकिन है. But okay, so that was an extra long but tough fast at the World Cup. But I think we had a lot to kind of get off our chests Yes, and discuss. precisely. तो आपने कोई भी काम की बात नहीं की है न्यूजीलैंड के मैच के बारे में. शायद कल के मैच के बाद मौका मिले पॉडकास्ट करने का, वरना we will probably see you in a week's time or so. But till then, let's hope Pakistan cricket keeps doing the BS that it always does, and we have more things to enjoy. Next week we might be very different. Oh yes, very sure, very sure. यैया टीम क्या करती है इस यैया वर्ल्ड कप में, हम देखते हैं. आप हमारी यैया पॉडकास्ट देखते रहिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज.